अगर आप क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स के वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या रिवीजन लास्ट मोमेंट पर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपका टाइम बचाएगी और आपके मार्क्स बढ़ाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ होम क्लास जोन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स will have a total charge of 1 coulomb? I repeat, how many electrons will have a total charge of 1 coulomb? और इससे पहले हमने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स की वीडियो, लॉन्ग आंसर्स की वीडियो भी बनाई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, a capacitor of a capacity 10 microfarad is charged with a source of 2 volt. Calculate the energy obtained from the source and the energy stored in capacitor. I repeat, a capacitor of capacity 10 microfarad is charged with a source of 2 volt. Calculate the energy obtained from the source and the energy stored in capacitor. Question number 2 is done. Next, question number 3. The intensity of the magnetic field B due to a current carrying circular coil of radius 12 cm at its center is 0.5 multiplied by 10 to the power minus 4t perpendicular to the plane of the coil upward. Calculate the magnitude and direction of current flowing in the coil. I repeat, the intensity of the magnetic field B due to a current carrying circular coil of radius 12 cm at its center is 0.5 multiplied by 10 to the power minus 40 perpendicular to the plane of the coil upward. Calculate the magnitude and direction of current flowing in the coil. और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और आपको जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो वो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ओके, और ये वीडियो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 4, a proton, a neutron and an alpha particle of same velocity enter perpendicularly in a uniform magnetic field of 10 to the power 5 t. Calculate the ratio of their time periods of revolution. I repeat, a proton, a neutron and an alpha particle of same velocity enter perpendicularly in a uniform magnetic field of 10 to the power 5 t. Calculate the ratio of their time periods of revolution. Okay, question number 4 is done. I hope आपको clearly दिख रहा होगा. Next, question number 5. A coil of 10 ohm resistance and 10 inductance is connected to a 50 volt battery. Calculate the value of energy stored in the coil. I repeat, a coil of 10 ohm resistance and 10 inductance is connected to a 50 volt battery. Calculate the value of energy stored in the coil. और आप चाहते हो कि मैं इनकी आंसर के साथ वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन EY equals to 3 multiplied by 10 to the power minus 7 sine bracket open 0.5 multiplied by 10 to the power minus 3 x plus 1.5 into 10 to the power 11 t bracket close volt per meter. Find the wavelength and equation for magnetic field of the wave. Question number 6 is done. Next, question number 7. Focal length of each lens is 10 cm as shown in the given figure. Find the distance of the image of point objects O from the convex lens and also draw the ray diagram. If both the lenses are placed in contact
then what will be the part of the combined lengths? ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है. ओके, आई रिपीट, focal length of each lens is 10 cm as shown in the given figure. Find the distance of the image of point object O from the convex lens and also draw the ray diagram. If both the lenses are placed in contact, then what will be the part of the combined lens? Okay, आई होप आप बेटा आप अपनी स्टडीज बढ़िया इस तरीके से कर रहे होगे. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. In an electric dipole, charges of plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are separated by a distance of 1.0 centimeter. Find the electric field intensity at an axial point at a distance of 1 meter from the pole of the dipole. I repeat, in an electric dipole, charges of plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are separated by a distance of 1.0 centimeter. Find the electric field intensity at an axial point at a distance of 1 meter from the pole of the dipole. ओके, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. क्वेश्चन नंबर 9. The equivalent capacitance is 20 microfarad. By joining two capacitors of capacitance C1 microfarad and C2 microfarad in parallel, if they are joined in series, the equivalent capacitance is 4.8 microfarad. Then find out the ratio of capacitance C1 and C2 where C1 is greater than C2. Okay, question number 9 is done. Next, question number 10. The atomic mass of 8 to the power 00 to the power 16 is 16.0000 AMU. Calculate its binding energy per nucleon. Mass of electron 0.00055 AMU. Mass of proton 1.007593 AMU. And mass of neutron is 1.008982 and 1 AMU equals to 931 megawatt. Question number 10 is done. ओके, और शॉर्ट आंसर्स की वीडियो और लॉन्ग आंसर्स की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.